हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। आज हम रिवर गंगा के पूरे कोर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। रिवर गंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, और भारत में इसे एक पवित्र नदी का स्थान भी प्राप्त हुआ है। गंगा का उद्गम, जैसे कि हम सब जानते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख से होता है, लेकिन वहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा का कोर्स लगभग 2500 किलोमीटर के करीब है, और गंगा के माउंटेन कोर्स यानी कि अपर कोर्स के बारे में समझने के लिए हमें उत्तराखंड से शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत करने के पहले मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि गंगा का जो कोर्स है, माउंटेन कोर्स यानी कि उसका प्राइमरी कोर्स, जो कि पूरे के पूरे पर्वत पर बसा हुआ है, उसमें बहुत सारे नदियों का संगम है, जैसे कि नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, और ये सारे ही जो संगम हैं ये किसी न किसी और नदी से जुड़कर बने हैं। और एक्चुअल में गंगा का जो पानी है वो इन सारे पानियों से लगभग मिलकर बना है। सो आइए समझते हैं इसके अपर कोर्स को। सो लेट अस नो अबाउट द अपर कोर्स ऑफ द रिवर गंगा। सो अपर कोर्स जो रिवर गंगा का है वो मेनली माउंटेन कोर्स है। एंड माउंटेन कोर्स में द प्रयाग्स यानी कि रिवर के एक दूसरे से ज्वाइन होने के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विष्णु प्रयाग, Nand Prayag, then we have Karn Prayag, Rudra Prayag, and lastly Dev Prayag. So I will tell you the importance of these Prayags also. So first of all, उत्तराखंड के मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं कि 4 धाम लोकेटेड है। फर्स्ट इज बद्रीनाथ, केदारनाथ, देन थर्ड इज गंगोत्री एंड द लास्ट इज यमुनोत्री। सो बद्रीनाथ के आसपास वी हैव अ रिवर विच इज नोन एज अलकनंदा. So this is the river which I am turning into a blue line. This is the river Alaknanda. And Alaknanda is the longest of the river in all these rivers which you are seeing on the screen. And Alaknanda को from the eastern part river धौली गंगा joins, and जहाँ वो join कर रही है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग. Then river नंदाकिनी also joins from the east, and इस जहाँ joining point है वहाँ कह रहे हैं इसको नंद प्रयाग. Then river पिंडर also comes and join river Alaknanda, and this joining point is known as Karn Prayag. And then a important river Mandakini is coming from Kedarnath, okay, and Mandakini joins river Alaknanda at Rudraprayag. Okay, this question is important. And then lastly, जिस रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख के पास से एक रिवर आ रही है जिसको गंगा नहीं बोलते हैं, वी कॉल इट भागीरथी. ओके, एंड भागीरथी जब अलकनंदा को ज्वाइन करती है उस पॉइंट को बोलते हैं देव प्रयाग. सो टेक्निकली देव प्रयाग के बाद जो रिवर आपको दिखाई देती है वो ही गंगा है. इसके पहले गंगा इसको नहीं बोला जाता है. गंगोत्री से जो भी गौमुख से रिवर निकल रही है उसको भागीरथी का नाम दिया गया है. एंड बाकी जितने भी रिवर्स यहाँ पे आपने देखे, मंदाकिनी फ्रॉम केदारनाथ, अलकनंदा फ्रॉम बद्रीनाथ, देन वी हैव धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, ये तीनों चारों जो रिवर्स हैं इन सबका पानी मिल के एक साथ देव प्रयाग में संगम बनाता है, एंड देन दिस रिवर इज नोन एज गंगा. सो ये जो रिवर गंगा है यहाँ इसका अपर कोर्स यहाँ तक का है. इसके बाद भी गंगा इज फ्लोइंग ऑन द माउंटेन ओनली, एंड यहाँ पे फ्लो करने के बाद गंगा कम्स अप टू ऋषिकेश. सो ऋषिकेश तक का गंगा जो है दैट इज इन द अपर कोर्स, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट as the mountain course of the river. So there is a cross sectional map also here which I have made for you. आप यहाँ से भी देख सकते हो. So ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो या आपको ये पर्टिकुलर नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर एंड टेक दीज नोट्स. सो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर अबाउट द रुद्र प्रयाग and Nand Prayag, Karn Prayag, Vishnu Prayag and also Dev Prayag. So these Prayags are all, इसमें जो common river है that is Alaknanda, and Alaknanda common river होने के साथ साथ सबसे बड़ी river भी है इन सब में से. and lastly जब इसको भागीरथी join करती है then we call it the Ganga river, and up to ऋषिकेश हम इसका mountain course या upper course consider करते हैं. ठीक है. Now on the map of India you can see the actual course of river Ganga. So I am drawing a blue line where you can see the river Ganga on the India map, and you will be able to see that in the Ganga starts from Uttarakhand, it flows in the whole of Uttar Pradesh, then it enters into Bihar, from Bihar it enters into the Jharkhand, and Jharkhand mein it is a very small area which crosses
and that is the district of Pakur, and then it enters into West Bengal, and after entering into West Bengal it goes into Bangladesh. The major part of the river goes to Bangladesh, and a small stream comes downward into the West Bengal state by the name of Hooghly River, or we can call it Bhagirathi Hooghly River. So this is actually the course of Ganga when you see it on the map. Now let me tell you that Ganga river has many tributaries. Okay, so there are left bank tributaries, there are right bank tributaries, but the major tributaries are from coming from the Nepal, and they are coming from some Uttarakhand also. Okay, so if you can see, the major tributaries which we should remember are Ghagra, Gomti, Gandak, Saptakosi. These are the rivers. And then from the southwards, the river Yamuna, which is coming from the Yamunotri glacier, it joins the river Ganga near Allahabad at Triveni Sangam. Okay? So Yamuna also starts from Yamunotri. It flows on the borders of Haryana and Uttar Pradesh. Then it crosses the state of Delhi, enters into Uttar Pradesh, and in Uttar Pradesh near Allahabad, Sangam, Prayag, it joins the river Ganga. Now, indirectly, many rivers from Madhya Pradesh, they join the river Yamuna, and indirectly they become the tributary of Ganga also, because ultimately all the water of these rivers also through Yamuna, they are going into river Ganga. सो फॉर एग्जाम्पल जो नदियाँ हैं जैसे कि बानस, चंबल, ठीक है, चंबल इज़ जॉइनिंग द यमुना, देन वी हैव पार्वती, देन वी हैव द काली सिंध, देन धासन, बेतवा, केन, एंड सोन रिवर जॉइन्स द गंगा नियर पटना. So it is a direct tributary, Son river, but Ken, Betwa, then Dhasan, Chambal, Parvati, Kali Sindh, Banas, they are all joining actually Yamuna, and ultimately Yamuna is giving waters to Ganga river in Allahabad. So that is why this whole region is known as Ganga basin. Okay, this whole region is known as Ganga basin because ultimately जो भी रिवर्स इस रीजन में आप देखते हैं वो सारे रिवर्स एक्चुअली गंगा को ज्वाइन हो रहे हैं किसी न किसी पॉइंट पे. दैट इज़ वाई दिस होल रीजन इज़ नोन एज गंगा बेसिन. सो दिस इज़ द कोर्स, एंड अभी तक जो अपर कोर्स हमने देखा है वो यहाँ तक देखा है ऋषिकेश से. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हरिद्वार इन उत्तराखंड इट सेल्फ एंड टॉकिंग अबाउट अप टू पाकुड़. सो पाकुड़ इन झारखंड, जो हरिद्वार से लेकर पाकुड़ तक वी कॉल द मिडिल कोर्स ऑफ द गंगा. ठीक है, दिस इज़ द मिडिल कोर्स ऑफ द गंगा. और आप कह सकते हो गंगा प्लेन्स पे चल रही है इस टाइम पे, एंड बहुत ज़्यादा मियांडर करती है. मियांडरिंग मतलब इस तरह चलती है, बहुत ज़्यादा रिवर में इस तरीके का फ्लो है, मियांडरिंग फ्लो है. ओके, एंड नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन अगेन सी द रिवर गंगा बेसिन. सो द मेन रिवर इज़ दिस वन, जिसपे मैं अभी ब्लू कलर का जो इंक है वो चला रही हूँ. दिस इज़ द मेन रिवर, and then this is the river Yamuna, which is joining the Ganga, and from the downwards Chambal, Kalisindh, Parvati, Dhasan, Ken, Betwa, Banas, all these rivers are joining the Yamuna river, and ultimately Yamuna is joining to the Ganga river. And then from the northwards it is Ghagra, Gomti, Gandak, Saptakosi, and from southwards again one more river we have Son, which is joining the Ganga near Patna in Bihar. So these are the main tributaries of the river Ganga in the middle course. So this is again the diagram of middle course, and you can see all the tributaries. So in the middle course only the tributaries are more, and all the names have been written, you can see from here. Now we come to Ganga in its lower course. So in its lower course it actually enters into West Bengal, and through West Bengal it comes to Bangladesh, and in Bangladesh the name changes. So the river Ganga is known as Padma in Bangladesh, and this river which you are seeing is coming from the northeast. This is actually Brahmaputra. Okay, so ये मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगी, दिस रिवर ब्रह्मपुत्रा. सो ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, एंड बोथ द रिवर्स जमुना एंड पद्मा मतलब गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जॉइन ईच अदर एंड दे मेक अ बिग डेल्टा. सो डेल्टा का जो 20% 25% एरिया है दैट इज़ इन द वेस्ट बंगाल, and the remaining 70 to 75% is actually in Bangladesh. So actually Ganga river का जो bigger part है delta का, that is present in Bangladesh. You can also refer to this cross sectional thing. Okay, so you can see the river is passing from Haridwar
and then it is flowing through the Uttar Pradesh state, Bijnor, Narora, Farrukhabad, Kannauj, Kanpur, Fatehpur, Saron, Allahabad, Mirzapur, Varanasi, Gazipur, and then it enters into Bihar. So in Bihar, Patna, Bhagalpur, Begusarai, these are the areas, and then it enters into Jharkhand by the name of the district Pakur. Okay, after Jharkhand, the lower course of the river starts, or we can also call it the delta course, or we can also call it as the erosional course of the river. So, erosional course or the lower course or the delta course of the river Ganga starts from Pakur in Jharkhand. It enters into the Malda and the Murshidabad districts of West Bengal, and then all the water, most of the water, it head towards the state of Bangladesh, and only a very small channel comes by the name of Hooghly, which is actually a distributary of river Ganga, because the water here gets distributed in two parts. So one part is the Padma river in Bangladesh, and another part is the Bhagirathi Hooghly river in West Bengal. So Hooghly river, which is actually the distributary, and many rivers from Jharkhand like Ajay, Damodar, and then we have the river like which is flowing through the Jamshedpur area. So those rivers are actually joining the Hooghly river, and again making the tributary of actually this particular distributary. Okay, so this is how the Ganga looks. I have showed you this map before also. So this is how the river Ganga looks, passing through Uttarakhand, and then we have Uttar Pradesh, then we have Bihar, a smaller part of Jharkhand, West Bengal, and ultimately into Bangladesh, and mouths of Ganga falls into the Bay of Bengal. So in Hooghly, in the Hooghly channel, the river looks like this. So you can see there are many rivers which are joining, and again the rivers are also detaching from the main course, which is called the distributary. Okay, so river Damodar, then river Roop Narayan, river Haldi, these are the rivers which are actually joining the river Hooghly, and some rivers are actually coming out also, and mainly the course of the main course is actually meeting the Bay of Bengal near the Sagar Islands, which we also call as Ganga Sagar. So this is the map of delta. So what is delta? Delta is actually the piece of land between the distributaries of the river, main river. So these are the distributaries or the tributaries, and in between are the pieces of land. So these pieces of land are actually known as delta. So pieces of land in between the funnel shaped, in between the fan shaped river is actually known as the delta part, and this is the cross sectional diagram of the delta. So from Pakur, the erosional features starts, that is why we call it as the delta course of the river, and then it goes to Farakka, which is also present in West Bengal. From Farakka, the river bifurcates into two parts. Bifurcate का मतलब होता है the river is distributing itself into two parts. One part is coming into West Bengal by the name of Hooghly river. The other part is going to Bangladesh by the name of Padma river. Finally, the Hooghly river joins the Bay of Bengal near the Sagar Island, which is known as Ganga Sagar also. And in the India map, the Ganga river is being seen like this, as you can see, and the length is around 2500 kilometer, 2500 kilometer almost. The length is like, it is the longest river in India, and it has a very big basin, as I showed you previously also, because all the rivers present in these areas are actually joining the river Ganga and making the bigger basin. In fact, the river Brahmaputra also could be considered, because the river Brahmaputra finally comes as by the name of Jamuna in Bangladesh and joining the river Padma, which is actually river Ganga only. So this was all about the course of river Ganga. I hope you understood the course. If you have any questions, you can put it into the comment section. Thank you so much and take care.